LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मानसिक शांति के साथ साथ NPS जीवन में संतुष्टि भी लाता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी NPS से जुड़ सकता है। किसी भी POP जैसे बैंकों, NBFC के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना NPS खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए NPS जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है। थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Good evening and welcome to the Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद राजेश। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताज़ा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। वेलकम दीपशिखा। धन्यवाद विभूति जी, थैंक यू राजेश जी। और अब अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ हैं मेरे सहयोगी राजेश लेख। Key domestic indices witnessed heavy sell-off. Sensex closes below 71,000 mark. Nifty finishes below 21,200 points. Parliament passes the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. And Brent crude oil topped $80 per barrel amid jitters over global trade disruption. घरेलू शेयर बाजार में आज भारी बिकवाली। सेंसेक्स 71,000 अंक से नीचे और निफ्टी 21,200 अंक से नीचे बंद। संसद ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 पारित किया और वैश्विक व्यापार में बाधा से जुड़ी आशंकाओं के बीच ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल से ऊपर। और बात घरेलू शेयर बाजार की। प्रमुख घरेलू सूचकांकों में आज भारी बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स 71,000 अंक के नीचे और निफ्टी 21,200 अंक के नीचे बंद हुआ। वैश्विक बाजार में तेजी के माहौल के बावजूद घरेलू बाजार में बिकवाली आई। IT और FMCG सूचकांकों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। सेंसेक्स 931 अंक या 1.30% टूटकर 70,506 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 303 अंक यानी 1.40% गिरकर 21,150 पर बंद हुआ। BSE विस्तारित बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 3.1% की गिरावट आई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 3.4% की गिरावट दर्ज की गई। इसमें The key domestic indices witnessed heavy sell-off today. The Sensex closed below the 71,000 points mark and Nifty finished below 21,200 points. The selling came in the domestic market despite upbeat sentiments in the global market. Barring IT and FMCG indices, all sectors traded with cuts.
The Sensex tumbled 931 points or 1.30% to finish at 70,506. The Nifty also declined 303 points or 1.40% to end at 21,150. In the broader market of the BSE, the mid-cap index plunged 3.1% and the small-cap index tumbled 3.4%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of all companies closed in the red, except HDFC Bank, which ended marginally high. Tata Steel tumbled 4.2% and NTPC plunged 3.8%. Tata Motors lost 3.3% and HCL Tech fell 3.2%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors logged losses. Utilities sector cracked 4.6% and telecommunications index declined 4.4%. Power index fell 4.3% and services index 4.2%. The overall market breadth was negative as the shares of 3,177 companies declined while those of 658 appreciated. A total of 86 companies remained unchanged. And you have जी रुपया की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ शेयर बाजार पे कुछ चर्चा कर लेंगे। तो विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 रुपया 18 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 102.33 पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा जी, सुबह में हमने देखा कि काफी ऊंचाई और उसके बाद शाम में अचानक ये गिरावट क्या दिखती है, अब क्या इसके मुख्य कारण रहे? देखिए, अगर आप देखें कि पिछले कुछ दिनों में इतनी तेज़ी आ रही थी बाज़ार में, तो थोड़ा सा ये था अंदेशा कि शायद गिरावट आएगी, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी होगी, थोड़ा करेक्शन आने की बात है। तो 2-3 जो कारण ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ असर जो है बाज़ार पर हुआ। एक तो कोविड की जो खबर चल रही है कि आज मीटिंग बुलाई थी मंत्रालय ने, यहाँ पर केंद्र ने, और स्टॉक टेकिंग लिया था। हालांकि ये कहा है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और ध्यान रखें। तो एक थोड़ा वो फैक्टर है। दूसरा, अगर आप देखें, कल रिजर्व बैंक ने जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड पे नॉर्म निकाले हैं, क्लैम्प डाउन किया है उनके लेंडिंग को, उसका थोड़ा ओवरहैंग था फाइनेंशियल सेक्टर में एनबीएफसीज के ऊपर। तो उसका थोड़ा सा असर शायद आया है, क्योंकि वो लेट नाइट न्यूज़ थी तो उसको थोड़ा एब्जॉर्ब होने में टाइम लगा, तो उसका थोड़ा असर शायद बाज़ार में आया। लेकिन करेक्शन कुछ हद तक आना ऐसा लग रहा था कि आने वाला है, तो ऐसा बहुत अनएक्सपेक्टेड सा नहीं था। So, adding to the negative sentiments was the COVID news. But what is attributable is towards this negativity the profit booking from the recent sharp rally, stretching valuations of mid and small cap stocks. This, Deepshika, despite the fact that Japan's Nikkei was trading higher by 1.5%, London's FTSE was 1% up, and the US 10-year and 2-year bond yields fell over 100 BPS each. And on top of that, the Brent crude oil prices were also trading below the 80 level. So despite all this, I think the fingers are pointing towards profit booking. Absolutely. So, in fact, Indian markets, if you actually see, they were sometimes when we didn't see that kind of a rally globally, but Indian markets were really performing well. And there was a sharp jump coming. Today, there was a sharp divergence from what was happening globally. So definitely, I think there were domestic factors which were playing on the psyche, and people wanted to book profit. So a correction was, it was sort of expected, and there was this, sense that it might come in some days. But it happened to be today. Okay. We'll be taking a short commercial break at this point of time and be back with you all soon.
सुरक्षित कल के साथ साथ एनपीएस आज आपको एक नया आत्मविश्वास भी देता है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. We are in discussion with business journalist Deepshikha. And Deepshikha, we want to find out from you about the market getting consolidated now, post what we have witnessed, particularly so in the small cap index, which ended 3.4% down today after scaling fresh lifetime high in early trade. And also the Nifty Mid Cap 100 registered its biggest single session fall in almost a year. So from here on, where do we go? Rajesh, if you actually look at the economic fundamentals and the way economy has been performing, way all the indicators have been suggesting, it looks like, and we saw very robust GDP numbers. The other numbers also are indicating at a very strong performance. We saw RBI also, they raised their GDP forecast for the financial year. So in terms of the overall economic story, that remains intact. In terms of the market performance, I think markets have been that momentum had been building into the markets. That story was sort of trickling in. So in terms of this, this correction which has come about, whether, this kind of a correction is going to continue for a while, it may happen. I think people are also looking at entry points. So I think this may continue for some time, but it'll be kind of a swinging moment. That's what I feel. Because overall, if you look at the global cues, they are very robust. Right. So I don't think Indian markets will remain, in the negative for very long. तो कुल मिलाकर दिखाया तो आने वाले दिन अच्छे हैं, सप्ताह अच्छा है, सब ठीक होगा। ऐसी बिल्कुल उम्मीद है कि आने वाले दिन जो हैं अच्छे रहेंगे, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखें तो एक बहुत ही अच्छा सा माहौल बन रहा है बाहर। So there's been a lot of selling across sectors today, but power, telecom, metal, automobiles, capital goods and real estate bore the brunt of it all. Going forward, what do you think how these sectors are going to perform? Or is it just a passing phase? I think it is just a passing phase, because if you see the, correction was very secular, it is across the board. And if you look at actual performance of the sectors, and we've seen, order books of the capital goods companies have been very robust, very strong. So obviously that will show up going forward. In terms of, the impact of infrastructure investment which has been happening from the government side, that will also show up on a lot of other companies which service the infrastructure sector. And we've also seen, private investment is sort of trickling into a number of sectors. So that I think will start showing up on a number of sectors, the sectors that you named. And in terms of demand, we've seen the consumption numbers of these sectors, particularly auto, they've been very robust, barring if you say two-wheelers, And it is expected that the rural demand, that support from the rural demand will kick in some time. So it may extend its support to these sectors. So in terms of the overall performance, I don't see anything really negative coming in for the India growth story per se. So do you expect the market to consolidate in the near term going forward? And also your personal view on, do you think we will remain positive on the market
will you remain positive on the market and expect recovery after a pause supported by global macros and along with interest rates peaking out and healthy domestic macros? Absolutely. So, there was this divergence in the India and the global story few months back because there were a lot of negative cues coming from Western economies. But now those cues have turned positive. The India story as it is gaining strength. So I think both the global cues and India story gaining strength will definitely play out going forward. So definitely, I think there's no reason to be not positive about, Indian markets. Okay. And a while back you mentioned, Deepshika, about RBI directing all the commercial banks, etc., to refrain from investing in any scheme offered by the alternative investment funds. So would you throw some more light on this? I think this was a clampdown by RBI because there was a concern around, this route being used to evergreen loans. So this has been sort of barred by the RBI because the money was, banks, NBFCs, and there was a cycle building up. And we've seen RBI's, being very cautious these days. It did a clampdown. It, raised risk weights for certain sectors, including the retail sectors, retail debt sectors. That again seems to be playing. It's going with a lot of caution, and it noticed that these transactions which were happening, they were sort of raising issues about there were regulatory concerns around it. So I think that is where this directive is coming from. Moving on, the Parliament has passed the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023 with the Rajya Sabha returning it to the Lok Sabha. The upper house returned the bill after discussion. The Lok Sabha has already passed this legislation. The bill has provisions to amend the Central Goods and Services Tax CGST Act 2017, which allows the central government to set up an appellate tribunal. The bill has provisions to increase the age limit for the president of the tribunal from 67 to 70 years and for the members from 65 to 67 years. The bill also allows advocates with at least 10 years of experience to be appointed as the judicial member. The bill has been brought to align the various provisions of the Central Goods and Services Tax Act 2017 and the Tribunal Reforms Act 2021 to initiate the administrative process for operationalization of the Goods and Services Tax Appellate Tribunals. Finance Minister Nirmala Sitharaman replied to the discussion on the bill. सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि कुल 5,43,000 उचित दर की दुकानों में से लगभग 5,41,000 दुकानों को EPOS उपकरण लगाकर स्वचालित कर दिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि इस पहल से अब अनाज का वितरण पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक आधार कार्ड से पुष्टि करने के उपरांत सुनिश्चित किया जा रहा है। What's in store for Thursday in the markets? You think this the volatility will continue, consolidation will continue? Though you did touch upon that, but I want to know from you what's in it on a serious note. Is this the first serious slide in the Nifty index? After roughly about 7 weeks of up move, will it result in further dip? We've seen in the past few sessions, there was this seeming euphoria building up, and sometimes it is seen just ahead of the close of the year. And that was there. And just when you are sort of ending the year, you see this correction sort of coming in because foreign investors also sort of, begin pull out and the new allocations come in only in the January. So you asked about Thursday. I think the overall sentiment with which the market ended today was of that correction mode.
But whether, that positivity, that euphoria sort of kicks in again tomorrow, I think probably they may come back, the bulls may come back, but there is definitely this sense of, these corrections sort of coming in as people, start booking profits with the, the sharp rise that the market And how will has the sort of... FIIs behave now? I think they'll take a break because Christmas is there, holiday season Holiday is there. season is typically, when they are sort of whatever money which has to flow in has already flown in during the year, and the next year's allocations will start after the holiday season. So today also I think they've pulled back some bit, not too much. There's not been a pull out per se, because obviously the India story is building up, and Correct. India and with the interest rate cycle sort of correcting in the Western world, definitely India would look very attractive, and the growth story as expected going forward, it looks very positive. So definitely I think going forward the flows would be coming into the Indian market. Deepshika will be taking a short break, but when we come back we'd like to know what your advice would be to the investors. एक आकर्षक निवेश के साथ साथ एनपीएस समानता का भी साधन है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back to Market Mantra. And जी हाँ, जो आपका सवाल था कि निवेशक के लिए क्या सुझाव होंगे आपके, वो तो एक है ही। दूसरा एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि देखिए, जो पीडीएस में जो सरकार ने जो ईपीयूएस का जो किया है, जो इससे एक पारदर्शिता आएगी लोगों के वितरण में, अनाज वितरण में, तो कैसा लगता है आपको ये? बिल्कुल। देखिए, पीडीएस अगर आपको याद होगा मतलब हम शुरुआत से जब सुनते आ रहे हैं कि राशन की दुकान में राशन आता ही नहीं है, कई बार आता है वो लोगों को मिलता नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, उसका समाधान जो है सर, उसमें काफ़ी पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है पिछले कुछ वर्षों से। कोविड के दौरान काफ़ी परेशानी हुई थी क्योंकि पलायन हुआ था लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य, और वहाँ पे उनको राशन नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड वाला स्कीम जो है योजना वो शुरू की है, और अब उसमें और पारदर्शिता लाने के लिए ये ईपीओएस जो है उसमें आधार बायोमेट्रिक रहेगा, तो कोई और आपकी जगह में जाके वो राशन नहीं ले सकता है। तो जो बदमाशी होती थी निचले लेवल पर वो पूरी तरह से हट जाएगी, तो जो बेनिफिशियरी है उसको ही मिलेगा। जी, अब मेरे सहयोगी राजेश जी के प्रश्न का भी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप राजेश जी देखें, जो निवेशक हैं, अगर आप ओवरऑल आप स्टोरी देख रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था की, देश की अर्थव्यवस्था में जिस तरह से सरकार ने केपेक्स का अपना एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत बढ़ाया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी आगे जाते हुए। उन सेक्टर्स को जो सेक्टर सपोर्ट करते हैं, डिमांड जो बढ़ेगी, डिमांड सबसे ज़्यादा आपका ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी यहाँ पे बढ़ेगी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो जब फसल बहुत अच्छी हो जाती है तो रूरल डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो रूरल क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल को बहुत सपोर्ट मिलता है, एफएमसीजी को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये जो सेक्टर्स हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ऐसा लगता है कि ये आगे परफॉर्मेंस अच्छी देंगे। एशियाई और यूरोप के बाजार का हाल जानते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुला रुख आज देखने को मिला है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.8%, जापान का निक्केई 1.4% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.7% बढ़ा। वहीं चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.3% की गिरावट दर्ज हुई है। दिन के कारोबार में यूरोपीय शेयरों में भी मिला जुला रुझान देखने को मिला है। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुट्सी में 0.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली और जर्मनी के डैक्स में 0.1% की गिरावट आई।
जबकि फ्रांस का कैक स्थिर रूप से कारोबार कर रहा था। The three major US indices extended its rally yesterday, advancing on the day as last week's dovish policy pivot from the Federal Reserve continued to reverberate. However, investors were looking to the key inflation data. The Dow Jones Industrial Average gained 0.7%, the Nasdaq Composite Index rose 0.6%, and the S&P 500 rose 0.5%. 2024 is just few days away, and how do you see the story of China, Japan and US unfolding, and what repercussions can their story have on the India story? If you look at the US story, the Japan story and the China story, all the stories are linked also, but they are also de-linked in a way. The US story is definitely looking much better, and if you look at the Fed's recent statement, it looks like things are looking better on the inflation front. They are looking at, they're probably indicating a cut earlier than was expected. The economy, it was a soft landing. It wasn't hit that hard. So definitely the US story, it's sort of is on a different page altogether, and that will obviously drive the global markets in a big way. Right. It will also have a huge impact on countries like India, which have a large export market in there. In terms of the China story still looks very uncertain. Japan, the indications are there won't be. Well today. They've done pretty well because I think the indications are that there won't be a rate increase anytime soon. So I think the support from the federal bank there is for the economy. So I think that will continue for a while. So that looks pretty positive from India's point of view. Moving on, Brent crude oil topped $80 per barrel today amid jitters over global trade disruption and geopolitical tensions in West Asia. In intraday trade, Brent crude was trading at $80.24 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude was trading at $75 per barrel when reports last came in. Now, this is a very, very acceptable level. और जल्दी में सोने का हाल जानते हैं कि आज MCX में फरवरी अनुबंध के लिए सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सोना 81 रुपये की गिरावट के साथ 62,395 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। Deepshika, really thank you for being with us and participating so wholeheartedly in the discussion related to markets and economy. Thank you so much. Yes, fingers crossed for Thursday. And before we close, the headlines once again. Key domestic indices witness heavy sell-off. Sensex closes below 71,000 mark. Nifty finishes below 21,200 points. Parliament passes the Central Goods and Services Tax Amendment Bill 2023, and Brent crude oil topped $80 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. नमस्कार। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अपने सुरक्षित भविष्य के साथ साथ वित्तीय स्थिरता के लिए भी एनपीएस पर भरोसा करें। 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी एनपीएस से जुड़ सकता है। किसी भी पीओपी जैसे बैंकों, एनबीएफसी के जरिए या npstrust.org.in के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए एनपीएस जरूरी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। अपना बेहतर कल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।